Today we again back with our series और with our channel ज्ञान पोर्टल। और दोस्तों आपका ज्ञान पोर्टल आज फिर से आ गया है एक नई चीज़ को स्टार्ट करने, जो हम करने वाले हैं हमारा यार A to Z DSA कोर्स, कि आखिर हमें DSA पे कैसे अपनी पकड़ बनानी है, हाउ वी अचीव अवर गोल्स। एंड दिस कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज फॉर अवर इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड फॉर अवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर अवर any coding challenges. So guys, this is for undergraduate persons. This course is for undergraduate, not only for undergraduate in IIT and IITs, but also in every college, because this is our basic and we have to learn about our basic. And there is around 20 steps in this course, and today we are with our first step, and the first step is learn about our basic. As you first of all we go with this video, I have to make sure that you must subscribe this channel and you must like this video, because it's more important that you can with us, because it is required guys, not because we want, it is for you bro. तो ये सब आपके लिए, आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए, एंड दिस इज़ योर थिंग। आप चाहे हाई लेवल कोडिंग करना चाहते हो, चाहे बिगिनर हो, चाहे आप मीडियम लेवल हो, लेकिन यार आपको अगर C++ के बारे में ढंग से नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बीच में जाना मत, नहीं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और एक बात कहते हैं ना यार, अगर आपको डिग करना है डेप्थ तक, तो सबसे पहले आपको सरफेस को हटाना पड़ेगा, सरफेस को खोदना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस की मिट्टी ही जो है तगड़ी होती है गाइस, ठोस सरफेस की मिट्टी होती है। तो सरफेस हमारा क्या है, C++, उसके अराउंड ही सारी कोडिंग है। तो हम आज जो है सरफेस के बारे में बात करने वाले हैं, C++ कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं आपके चैनल ज्ञान पोर्टल के साथ। और आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट सीरीज़ को लेके, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेंगी। आज हम इनपुट आउटपुट के बारे में बात करेंगे कि आखिर कैसे C++ का एक बेसिक स्केलेटन होता है, कैसे हम उसमें इनपुट आउटपुट लेते हैं और कैसे हम जो है चीज़ों को लेके प्रोसेस्ड करते हैं। तो कहीं मत जाइए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि यार वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। और तो क्विकली हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम कैसे चलते हैं, और इसके लिए हम चलते हैं अपने VS कोड पर। हमने अपना VS कोड खोल लिया है, आप लोग भी अपना जो है VS कोड पहले इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के लिए आप वीडियो ज़रूर वॉच करिए इंस्टॉल करने की, क्योंकि VS कोड में आपको अगर C++ के साथ वर्क करना है तो आपको 2 एक्सटेंशंस इसमें डाउनलोड करनी पड़ती है VS कोड के बाद। एक आपका होता है C++ और एक आपका होता है कोड रनर। और कोड रनर को आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है सेटिंग्स में जाकर टर्मिनल में कोड को रन करने के लिए आपको इनेबल करना पड़ता है। तो उसके लिए आप वीडियो ज़रूर देखिए इसकी। और हम बिगिन करते हैं कि आखिर हम आज जो है, तो इसके लिए मैंने क्या कर लिया, मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया यार, एक अलग फाइल बना लीजिए इसके लिए, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अलग फाइल की। तो इसको मैं जो है रीनेम कर लेता हूँ इस फाइल को, क्योंकि ये हमारा न्यू फोल्डर तो यार नाम नहीं होएगा ना, नाम तो कुछ अच्छा देना पड़ेगा ना, जब भी तो लगेगा ना क्लासिक सा यार कि कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको हम दे देते हैं A to Z कोर्स, ठीक है। तो ये मैं ओके, तो ये यहाँ से नहीं होगा क्योंकि हमने VS कोड में खोल रखा है इसे। 2 मिनट में अपना VS कोड बंद करता हूँ। तो अभी देख रहे हैं आप, आपके साथ यार मैं भी इस कोर्स को कर रहा हूँ, ठीक है। आप खुद देखो कि मेरा भी अभी जो है खाली पड़ा है, मैं रोज़ाना आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। तो यार इसको ज़रूर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यार ये सब आपके लिए हो रहा है और आपके साथ मैं भी सीख रहा हूँ यार, तो मज़ा आने वाला है, क्योंकि दोनों साथ में सीखने वाले हैं भाई भाई। तो रोज़ चीज़ों को लेके करते हैं और कुछ अच्छा सब बनाते हैं साथ में। तो सबसे पहले हम जो है फोल्डर अपना ओपन कर लेते हैं, जो मेरा फोल्डर पड़ा है डेस्कटॉप पे A to Z कोर्स का, ठीक है। और इस A to Z कोर्स के साथ हमने जो है, हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम अपना फर्दर जो है बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि यार कोई भी डाउट ना रह जाए, कोई भी चीज़ें ना रह जाए, तो सबसे पहले हमने बनाया लर्न बेसिक। हम लर्न बेसिक करने वाले हैं इसमें। और लर्न बेसिक हम किसके बारे में करने वाले हैं, C++ के बारे में, जैसे हमने बताया। तो आज हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट के बारे में। तो इसका मैं फाइल का नाम भी जो है दे देता हूँ, IOP, ठीक है।
तो इसका मैंने इस तरीके से इसे जो हम सेव कर लेते हैं। और अब इसमें हम बात करेंगे कि फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्केलेटन ऑफ द इनपुट आउटपुट प्रोग्राम, कि हाउ वी डू these things, like how we write our code in C++, and for that we need a skeleton, and for that skeleton we use the basic libraries, guys. In C you have some basic libraries like and you have to include their path by hash include, and this is like this: hash include iostream. Iostream is a library which enables and which give us a requiring libraries and furthering functions which we require to make this program successfully runnable. So such like these libraries, there are many other libraries, like for math input functions we have hash include math library, math.h. there is for string function there is a string library. So like this we have required to include these paths, but we not needed in this basic input output program. So we start with it, and we can say that we require basic hash include iostream for the library. Don't go like why sir, why we use this library. Don't think that much, because I said now, before doing the thing deep you have to understand the basic level. So think just basic skeleton. This is a basic skeleton of CPP, in which you have write your logic and you have write your codes. Before going to logic we have learned about these things, which is very crucial part of the course. Like there is a int main function. Int main function is basic function in which all our program is run as execution goes goes from this thing. And last we have to return, because we have take a input we have take int as our data type. That's why we return 0, because it is an integer and we have to return integer. This is a generic skeleton of C++. तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जेनरिक स्केलेटन हमने डिस्कस करा है कि ये बेसिक एक जेनरिक है। अब इसके बाद जो मेजर हमें डिस्कस करना है, इनपुट आउटपुट इसमें कैसे होना है। इनपुट आउटपुट इसमें कैसे होगा गाइस? इनपुट आउटपुट इसमें होएगा हमारा बेसिकली, हमें क्या करना होता है, हमें करना है सी आउट हे ज्ञान पोर्टल। क्या ये जो है कर जाएगा? नो। For that C out to be worked, there is something called std and std colon. There is std colon, and after this we have to save this, and we run in the terminal. As you see, there is a terminal, and there is printed. I zoom the screen. Hi Gyan portal. So like this way it's shown to you. Like it is visible in your screen. Now we see like again we write similar thing, std colon cout hey Gyan portal, and now we write the things in small letters, and we run again. And as you see, there is our input, and we see it is on the same line, but we write the code in the different line. Now you have think, and you must have think कि why it happens, ऐसा क्यों हुआ कि भाई ये अलग लाइन में आ गया, जबकि हमने तो जो है दोनों को सेम लाइन में लिखा है, मतलब अलग अलग लाइन में लिखा है लेकिन नीचे सेम लाइन में है। तो दिस इज अवर बेसिक सिंटेक्स, एंड फॉर if we want in different line we use and now we save, and as you see there is another line. So for different line we require slash and n. यह हमारा कमांड करता है for another line. Does there is any other thing we require any other
alternative for this? Yes, you have any other alternative like use std and then, and as you see now your code also work. So in this way you have to write like if you require you can write again gap again hey, and then you again print it. And as you see now what is our output? As you see we give the gap, there is a gap hey, but in another line there is no gap and there is no space. That's why hey and that hey is coincide with it. So this shows the basic thing. Now there is something in your mind like why we use std. Like std is a basic library and for, तो लग रहा होगा ना यार बार बार std यूज़ करेंगे क्या हर फंक्शन के लिए? सर नो यार, हर फंक्शन के लिए std यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो सिंपली हम क्या करेंगे हम अपना बेसिक सिंटैक्स में यूजिंग नेम स्पेस की हर जगह जहाँ पे भी मेरा कोई आता है वहाँ पे नेम स्पेस लगा दो std। अब हमने क्या करा ग्लोबली std को कर दिया। अब हमें std बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है सी आउट सी इन पे। तो सी आउट किस लिए होता है? सी आउट हमारा प्रिंट कराने के लिए होता है, कोई भी चीज़ को प्रिंट करवाने। देखिए प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर हम इसे कमेंट कर दें और अब मैं चलाता हूँ तो क्या होगा? अगर मैंने इसे हाइड कर दिया एज यू सी आईडी रिटर्न हो गई हमारी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। अब हम चलते हैं कि ये तो हुई बेसिक इनपुट की बात। नाउ वी फॉर इनपुट वी यूज सिन SCIN और हमारे जो हैं लेसर देन साइंस आएंगे एंड देन वी मेक a variable like we use sin and we use cout what this is a numerical value x और ये हमने लगा दिया इसमें बेसिक व्हेन भी। मुझे इसलिए VS कोड बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस क्योंकि यार इसमें जो है ना एरर्स आपको जो है बता देता है कि कौन सी लाइन में कौन सी एरर क्या एरर आपने कर दिया। जैसे मैंने अभी गलती से सेमीकोलन छोड़ दिया था तो अब इसने क्या करा, अब इसलिए यहाँ पे आपको आप इनपुट करवाइए। जैसे मैंने करवाया 45 और देखिए आगे वैल्यू दिस इज़ अ न्यूमेरिकल एक्स वैल्यू दिस। एंड अगर मैं फिर से अब चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं चाहूँ तो 2 वेरिएबल बना देता हूँ। 2 वेरिएबल बना दिए तो 2 बार इनपुट मैंने दे दिया, 2 बार इनपुट दे दिया like views and y and now we give 2 values like 5 or 10. This is our numerical x value this y this. So this is our basic input output concept and if you not understand much about then don't go any other way, just do the practice and you understand the concept of how we input output. For the beginners it is more necessary, do the practice, and for medium level or for hard level person I must say just go through the basics and keep our channel subscribe and do your best। एंड गाइस फिर से मिलते हैं ज्ञान पोर्टल के साथ एंड फिर से ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ कि हमें लर्न बेसिक में और नेक्स्ट हमें क्या सीखना है। हेलो गाइस, वी आर अगेन बैक विद अवर सीरीज ऑन द ज्ञान पोर्टल। द नेम ऑफ दैट सीरीज इज लर्न द बेसिक अबाउट how you know about C++ and this series is all for beginners and for advanced persons because as we already discussed about the input output things in C++, which I already mentioned in the I button. Please click on it if you not see that video because it is important ki how you take the inputs and outputs in C++ program. Now at this video our basic thing as you see is about
our data types, कि what are our data types and how we use in the data types in CPP, and how many data types are there and what are their ranges and many things about that, and we explored that thing. So before starting this video, I must recommend you, please subscribe this channel and share this video to your friends. So so guys, let's start this video. First of all, I have to make a page of data type, and this data type, in data type, now we considered our first we include our skeleton, our basic skeleton, and in the previous video, as I mentioned, if I not mentioned, then there I tell you one thing, that by including bits stdc++.h, we include all the libraries, and we not require we not required to include the libraries one by one, like mat.h, string. We just include all these libraries with one library function, which is bits slash stdc++.h. using namespace std. So guys, now we talk about the int function. Like I already told you, the int is our data type which we used basically for the numerical numbers. Like numerical numbers, what are the numerical numbers? Like 1, 2, 3, 4, 10, 15. All these numbers are the numerical number, and these numbers have int is stored in or initialized or assigned to a variable which is like x equals to 10 by our data type called int. Int is also known as a integer. In small form we write it in C++ code, that is int. And if you want to assign it, then you can assign it by like this, and there is like we see out x, and now you see it get printed, it shall be printed. Wait a minute, I not saved. Now I do it again. As you see, the 10 is printed guys. तो दोस्तों 10 प्रिंट हो गया। इसके साथ अब हम समझते हैं कि what are their restriction. There are certain restrictions about int, like they have some mentioned range in which we can store, which were shown to you in the screen. As similar to int, we use for greater numbers. For greater numbers we use long x, sin x, cout x. Like 45. So like if you have require more space, and if you have require more ranges of the number, then you use long x. And like I assign sin x, cout x. And as we do this, it shall be printed. सो गाइज, हमने क्या समझा कि इंट के हम रेंजेस में डिवाइड करा गया, इंट को लॉन्ग में, एंड देर इज समथिंग मोर, लाइक इफ नाउ देर इज अ नंबर विच हैव अ डेसिमल वैल्यूज लाइक 5.67, 5.6784. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, विच इज अवर फ्लोट, value, and which is our double. So first we consider a float value x equals to 5.67, and there are different ranges of the decimal. And we also considered a float value of y equals to 6. Now we see out x and y. We see the result. First of all, what are the result going to happen. As you see, 5.67 is 1 and 6. So
इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारी फ्लोट वैल्यू हो या डबल वैल्यू हो, ये भी जो है इंटीजर को स्टोर कर सकते हैं। बट अगर डेसिमल पॉइंट्स होंगे तो वी कैन easily do the decimal things with float, but we similar thing we use in the long int cases, it shall not be printed. Like I show you, if I assign this thing, if I assign similar this thing to long, like I assign similar thing, what happened, yes, 5.67. So as you see 5 is printed. So I hope you understand कि for our integer values we have all these thing to be like we have int, we have long, we have long, we have float, we have double. Next thing is about, we talk about how we store the string values. Like there is a string called, we assign the string as, we see in as, and we see out. Yes. तो हमने एक स्ट्रिंग बना लिया और हमने उसमें असाइन कर दिया। अब हम लिखते हैं हेलो ज्ञान पोर्टल, और देखा तो हमने क्या यार, नेक्स्ट लाइन में हमारा प्रिंट आया हेलो ओनली। ज्ञान पोर्टल क्यों नहीं आया? आपके माइंड में आया होगा, बिकॉज जब भी स्पेस आ जाता है तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो बस एक ही पर्टिकुलर चीज़ को कंसीडर करता है, वो आगे वाले को कंसीडर नहीं करता। वो सोचता है कि यार ये तो स्पेस आ गया तो ये ब्रेकआउट हो गया है यहाँ पे, तो ब्रेकआउट की वजह से इसने ऐसा करा है, ठीक है। और अगर आपको जो है प्रॉपर फुल, अगर मैं कहूँ कि इसे वही हमने मान लिया कि भाई इसने ऐसा करा, हमने कहा कि चल भाई ठीक है, हमने दो स्ट्रिंग बना दी और हमने कहा कि भाई तू सी इन ले ले S1 और सी इन ले ले S2, और अब तू सी आउट कर दे हमारे S1 और S2। तो चलाते हैं और हम फिर से लिखते हैं हेलो ज्ञान पोर्टल। तो अब की बार आपने देखा हेलो और ज्ञान, तो स्पेस के बाद क्या हो रहा है कि वो हर स्ट्रिंग को एक डिफरेंट स्ट्रिंग मान रहा है। जैसे स्पेस आ जाता है तो वो एक स्ट्रिंग को जो है डिफरेंट स्ट्रिंग मान लेता है। इस वजह से हम जो है इसमें जो है हमें कैसे असाइन करना होता है, इफ़ यू वांट टू असाइन द होल लाइन देन यू यूज अ गेट लाइन फंक्शन विच आर इनबिल्ट फंक्शन ऑफ सी, लाइक यू यूज str string str and you use getLine sin str and you use cout str, and now we do the same thing and we write hello Gyan portal. So now you see the whole line is should be printed. After this there is another thing like character. For character variables there is a range of around in 256 characters is there, and we have used a char function for doing that, and for cout हमने जो है करेक्टर का cout ले लिया है, and now we take, if I write here hello, then you see it only take a single alphabet which is H. So this is our character value, and as you see every data type. Now there is a question in your mind कि as there are many things like you have one question in your mind, you must have one question कि सर देर इज int long float कि हमारे पास इतना सब कुछ है, then why such type of diversity of data types, why we require this and how we choose these data types. So basically I answer you this question. There are in our computer programs, as you see, our everything takes some space, some memory space, and all
मेजर थिंग इज अबाउट द मेमोरी स्पेस कि हाउ यू टैकल द मेमोरी स्पेस। एंड यहाँ भी मेमोरी स्पेस का ही चक्कर है। आप जब इंट को करते हो तो आपकी एक पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस है, जब आप लॉन्ग को असाइन करते हो तो आपका एक पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस है। अगर आपको उतने मेमोरी स्पेस की जरूरत ही नहीं तो वाई यू शुड गो विद द लॉन्ग, बिकॉज यू ऑलवेज ट्राई टू थिंक अबाउट द मेमोरी स्पेस की वी टेक अ लेसर मेमोरी in every run. That's why I told you कि there is some memory space, as there is I already displayed you the sheet of what are the ranges and what are the memory spaces, and it's already visible on your screen. Please see that, and I hope you like this video, and be with us, subscribe this channel and share this video. I hope you like this video. Hello guys, we are again back with our series Learn the Basic, and today we discuss about else if conditions, कि how we use the else if conditions in the program, and how we utilize these else if, and how we basically what are the syntax of using this else if. Or for going to show the else if usage, I make sure I uses or I make some programs, make some runnable programs. So guys, you have to practice these programs on your computer, and before starting this video I must say, please subscribe this channel and comment and mention in the comment box what you like in this video and what you want more. So let's us guys start this video. First of all, basic syntax of basic skeleton syntax of C++. So guys, this is our basic skeleton of the first program, our first program. And for making a multi comment we use a slash and then stark, or for our multi comment we use this. And for the first program first we considered as adult or not. And as you know, for adult there is a particular value called above 18, and for below adult, like below 18 is not. So guys, how we use this in if else, we use this. First of all, there is a if braces and there is a else braces. This is our basic syntax of if else conditions which we make. And if something is executable if the condition inside the brackets are true, like we considered int age, then sign age and sign age, and then age. If age is greater than, if age is greater than equal to 18, so we say that it is adult. See out, adult. Else if we say see out not an adult. So guys, let's run this code. Just like I use 24, it shows as adult. I use 15, it shows us not adult. So this is our not adult program. Key, is it eligible for mode or not? Now if you like, you can also write is else if. You again check the condition key is age is lesser than 18. Does this is okay? Yes, this code is okay. You can check the condition again, like 34 adult, 12 not adult. So this condition is also correct. So I hope you understand कि you also use a else if. Now we make a second program. I comment this program, and we make a second program. Program second is basic a grade program. Grade A, B, C, D, E and F.
So for giving these grades you have some marks criteria, and that marks criteria is around particular, like I first initialize a mark variable and I take a mark variable as a input. First we check if mark is lesser than 25, C out is F. If mark greater than 25 and marks जो है 45, I say C out E. If mark greater than 46 and mark 59, what I say D is assigned. If mark equal to 60 and marks equals 75, sorry 69, I assign C out C. If mark 70 and marks 79, if equals to 70 and mark 79 is assigned, then you have to see out a grade B. And if mark greater than equal to 80 and mark greater than 90, then see out A. Now we typically check for 24, F is assigned. Again call and we say it gets 55. We see the D is assigned. We say the person is brilliant and he gets 78. D is assigned. But as you see, if I say 12, F is assigned. But in all these conditions, if we check if condition as 25, it will not return. It will check, it will see out, but again it will check, because there is a if condition, and if condition you have to check one by one. That's why we can say the syntax is usable, but it is not properly usable because it takes a time more, because every time we use if. So instead of this, you can use at such time we can use else if, and now we not require these conditions because it already considered कि if marks is greater than 25, then it will be here. Similarly for this, else if. Similarly for this, else if. Similarly here also, like we use a else if. Now the condition is also true, like as you see 55, the D is printed. If I say you got 85, A is printed. And if I say you got only 23, then F is printed. So guys, as you see, this shows us how we use the else if program in that condition. Today we discussed about the concept of switch case, कि how our switch case is working. जैसे कि आप जानते हो स्विच केस ज़्यादा तो वर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है हम जो है स्विच केस को समझने वाले हैं. और उससे पहले मैं आप सबको ये कहूँगा कि यार मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल
because this is the basic motivation to make the videos for you guys. And if you want a specific topic, then please mention in the comment box. Now let's start ki what is our first of all I have to include our basic skeleton of C++, as you very well know about this. I think you also understand this concept of basic structure. Now in this thing आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बेसिकली क्या करेंगे कि जैसे आप जानते हो कि यार हमारे जो है नंबर ऑफ डेज होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 को हमने जो है नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे हमने कर रखा है। तो आज हम उसी बेसिस का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो आज का जो प्रोग्राम होएगा वो हमारा होएगा कि भाई प्रोग्राम का जो नाम होने वाला है, प्रोग्राम का नाम हमारा आने वाला है कि भाई नंबर ऑफ डेज हैं और नंबर ऑफ डेज and you have to write a corresponding day name. ठीक है, तो corresponding day name आपको बताना है कि भाई आखिर क्या आएगा। तो corresponding day name की अगर हम बात करें तो हम क्या करना है, सबसे पहले हमें एक int day बनाना है। int day को हमने c in कर लिया, we have to take a input day, then now it's a condition about switch. We make our switch, and switch we pass the day. Like if you add any here we take a integer, that's why I make my cases as integer values. But if you take it as a character value, then you make up values as a cases of characters, like cout Monday. And after this I just copy and paste. Okay, so here we make 2, it's 3, it's 4, it's 5, it's 6, it's 7, and it's basically our default key. If there is nothing, then there is a default statement. We make a differences like it's a Tuesday, it's a Wednesday, it's a Thursday, and so on, like Friday, Saturday, Sunday. Invalid. And this is our basic thing. If now we run this code on the terminal, then we make a day input, like I make a day input as a 4. Okay, like okay, सेमी कॉलन अगर हम नहीं करते हैं तो जो हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेट नहीं होता, और वही चीज़ को इसने and as you see, when we take an input as a 4, then not only Thursday is printed, but their consecutive Friday, Saturday, Sunday, and invalid is also printed. Why do you think? Yes, because in the such case, whenever you mention the cases, you have to break that case so that it for any conditional looping, to be break at the point, you have to use a break statement. So in that thing I have to mention a break. Here I have to mention break,
and now we run this code again, and if I run this code and we use 2, it's Tuesday. If I make it 18, it invalid. So guys, as you see, this is our switch case, and how we doing this I shown to you. Now let's meet with basically array is a continuous allocation of a same integer or a same data type to a various couples of variables. As I told you, like basically first of all I have to make our skeleton, and as till I made a skeleton, please subscribe this channel guys. And I have said कि like a basic skeleton, if we consider there is A, B, C, D, we make easily C in A, C in B, C in C, C in D, because there is only around 2, 3, 4, 5 variables. But if you if I said please make like if I said to Rajiv, please make 100 variables and assign the values, and I said ki there is a int they all are integer, so does it require to make a variable one by one? Is it possible guys? Do you think it? No. Like why we do such type of work? If there is something we call smart work, why do we prefer hard work? So at that time our array came into the concept, like we have make a contiguous similar data type array, like their initialize is like I initialize it like this, like we add and we say there is 5, and we make in such a way 100 of we make 100 storage by using such type of thing. And as I mentioned, there is a array 5. Now what we can easily do, we can easily do like C in array 0, C in array 1, C in array 2, C in array 4, C in array 3, 0, 1, 2, 3, 4. Basically in the basic array representation of 5 is their basic index is 0. As I show in the above figure, you see that there is a basic representation of the array. And if I do, now we see out only array 3. What is this? Let's see the result. And now I make 1, 2, 3, 4, 5, and you see array 3, and we make a array 3 and there is a 5 is printed. So guys, in this way the arrays work. Now if I say ki I change the array 3 as 15 or 12 something, so I basically assign it, and now I just give a input of some variables. Now it's printed array 3 as a 12. If I say please add it 12, then if I now use like 1, 2, 3, 4, 5, it's now 17. So in this way our array is working. Like in the similar way we make a long array. Matlab, the array is that contiguous memory allocation in which we have take a similar data type. All things have a similar data type. If I say कि you have considered a decimal value in the integer array, then that decimal value is get terminated and you can only get a integer value. So that's why if you use a decimal value, then you consider a float array or a double array, and if you use an integer value, then make an integer array. And in the similar way you can, and there is a contiguous memory allocation. If I say there is a contiguous memory allocation, as the previous video you see in that diagram, there is a contiguous memory allocation.
and now I say it's about a 1D array, and it's only a basic. We already came so far around 40 to 55 videos about array, ki how our array work and what are we make the array suitable to us in coding with C++. So make sure you are with this channel, bro. Now there is a 2D array. 2D array is similar like 1D array, like we only just one thing, like there is a 3 or 4. Like now there is a 3 rows and 4 columns, and in the similar way as I doing the previous, in that similar way now we also utilize the 2D array. So I not going too much depth. We already discussed about 2D array in the further videos in future. Little about I will talk about strings. String, like as you see, string we make a gyan, like I assign string as a gyan. As a gyan portal I assign the string, and if I say please see out S0, now what is the result? So it's G. So do you think कि our string is also act like an array? There is a S0, 1, 2, 3, 4. Like if I make it is S dot length -1, and then I use and then I run the code again. As you see, now L is printed because v dot s minus length -1. So guys, this is how our array and basic string we work, and we discuss about the basic concept of the array and string. In further videos we going in a depth knowledge about that. But before going to that videos, I say must subscribe this channel, share this video, and होप बने रहिए हमारे साथ ज्ञान पोर्टल के साथ, और फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियोस के साथ मिलते हैं. Hello guys, welcome you all to our series in Gyan Portal Basics about C++, and today we discuss about a very important topic, which is a looping, कि how we make a loop. And first loop is our for loop, and in our entire DSA looping is required. Looping is our basic requirement. So guys, before starting this video, I must say please like this video and subscribe our channel for more videos. So let's start the concept ki what why we require. First of all, we understand why we require for loop. As you know, if I say, if someone says to you ki you have to print your name 5 times, then you basically what you can do, you say, sir, it's a easy task. I can easily write about my name 5 times with cout or with printf function. But what in case if the other person say you have to write your name by 2000 times, then it is a problem? Yes, maybe it's a problem. Maybe someone say like, sir, I have very much time in my life. I write cout and then copy it many times. Yes, you do it. But in terms of coding purpose, you know कि you have lakhs or millions of lines of programs. So in that case you always write such things like you always do cout in such way for 2000 code of line. No guys, no, you're not doing such foolish thing. So for that you can go with a for loop. Basically what you say, you can do like this कि first of all you have to write a for and then braces. After that you have to initialize. The first is our initializer. Basically I initialize int I equals to 0. Then there is a condition checker कि our loop is going from this to this, and after this if I not increment it, it can stuck to at a 1 to we get a infinite loop.
So for that I use a incrementer, and now I write cout Gyan portal is back, and next line clear /n, and now I save it and I run it. As you see, the Gyan portal is back, and it will be appear 5 times, and if I require 25 times it will write 25 times. So basically now it's our main purpose is to write a proper condition with a proper initializer, and if you want the initializer like this, you also initialize like this. It's up to you what you think to do and what your thinking level, and basically this type of thinking is very much required in case of when we go with on some pattern logics, and our next thing will be about developing our logic with the help of patterns, and it is very good concept in sometimes in your coding interviews, in your college exams. You have basic level of concept about you have to know about the basic level concept of patterns, how you printed the star mark, how you printed the kite. In such way you are utilize this concept, or in that thing I talk about how we use the nested looping, how we go to the nested looping, how we put a condition inside our for loop, and all that thing I have discussed in that video. Now after the for looping, there is another loop which is called while, and while is basically there is nothing different. While is similar as our for, they also work for looping, but the syntax is little different. We just give a condition here and we initialize it in the upper part and go with it like this, and then I cout I, and I do like this, and I printed, I run my code. Now you see 0 1 2 3 4 5. Okay, so like this our while. But in some cases you have to require like you only want ki at least one a time your loop is going to work. If condition is false but your loop is work once, and at that time you have to require what? You have to require a do while loop. The concept is that you have to use a do like this, and you do cout Gyan slash and you just increment I plus plus, and you just run it. Okay, I make a mistake, semicolon. What is the problem now? Okay, here also. And as you see, only once your loop is going to work. So guys, in this way our looping concept is will be worked, and in next video we talk about much more concept about basic C++. So guys, must subscribe this channel, like this video, and hello guys, today we again back with Gyan portal and with our series basics about C++. एंड दोस्तों आज का टॉपिक यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में कि व्हाट आर फंक्शंस एंड व्हाई वी नीडेड द फंक्शंस. फंक्शंस अगर हम बात करें कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस हमारा बेसिकली फंक्शंस हमारी थिंग होती है जिससे हम आराम से अपने कोड को मॉड्यूलराइज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं. फंक्शन के थ्रू हम जो है अपने कोड को रीडेबल बना सकते हैं. तो फंक्शन make our code more modularized, readable
मोर मॉड्यूलराइज, मोर रीडेबल, और कि हमें जो है हमें बार बार चीज़ को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करते हैं रीयूजेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे फंक्शन, अगर हम बात करें बेसिक अबाउट फंक्शन के बारे में, तो फंक्शंस हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो हम कौन कौन से फंक्शन यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं अपना वॉइड फंक्शन, हमारा कोई रिटर्न फंक्शन हो गया जिसमें हम जो है किसी वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहे हैं, हमारे पैरामीटराइज फंक्शन, हमारे नॉन पैरामीटराइज फंक्शन, तो ये हम जो है यूज़ करते हैं और हम इन सारे फंक्शंस को देखने वाले हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ रेफरेंस की रेफरेंस बाय वैल्यू। ठीक है, कि भाई पास रेफरेंस के थ्रू और पास बाय वैल्यू क्या क्या होता है फंक्शंस में, वो हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों कहीं जाइए मत, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम देखो, हमें किसी ने कहा कि भाई हमने क्या करा, हमने एक फंक्शन लिखा और हमने कहा भाई हेलो हेलो ज्ञान पोर्टल। अगर सोचिए ये फंक्शन हमने लिख रखा है, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन आया और वो इस फंक्शन को देखे, क्या उसे समझ में आएगा कि यार ये सी आउट का क्या मतलब है, क्या उसे समझ में आएगा? जिसको यही मतलब दे हैव नॉट नॉलेज अबाउट द C++ प्रोग्रामिंग, देन डज ही नो। या हम कह सकते हैं कि यार उसने आपके ज्ञान पोर्टल की इनपुट आउटपुट की सीरीज़ नहीं देखी है, तो उसे पता नहीं है कि सी आउट क्या होता है। तो क्या वो समझ पाएगा कि सी आउट कर क्या रहा है? नहीं यार, नहीं समझ पाएगा। सही बात है भैया कि नहीं समझ पाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें बेसिकली कुछ नहीं करने की ज़रूरत, हमें क्या करना है, हमें वही फंक्शन बना लेना है जो हमारे इस काम को मॉडलाइज कर देगा और रीडेबल बना देगा। जैसे अगर हमने क्या करा, हमने कहा भाई चल ठीक है एक वाइड फंक्शन बना लेता हूँ जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बस आपको क्या करेगा, प्रिंट करेगा नेम को। और हमने लिख दिया इसके अंदर सी आउट ज्ञान पोर्टल, और ये करने के बाद हमने यहाँ पे बस उस फंक्शन को कॉल कर दिया और चला दिया। और ये हमारा फंक्शन का जो है चल गया। ठीक है, तो दिस इज़ अवर वॉइड फंक्शन, बेसिक टाइप हमारा। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अब कोई कहेगा भैया कि भाई इसमें तो आपने भैया सब कुछ जो है कोड कर लिख के करवाया है, आप ऐसा कुछ करो ना कि भाई बंदा आउटपुट और इनपुट दे सके। तो ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा भाई चल ठीक है, तेरा भी मैं मान रख लेता हूँ। मैंने कहा चल एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बना ले, एंड देन तू क्या कर, उसे सीन करवा ले नेम को, और उस नेम को हम क्या करेंगे, हम इसमें पास कर देंगे। तो पास कर देंगे और भाई वेरिएबल दे देंगे, यहाँ पे जो है एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बना देंगे। ओके, और स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बना दिया हमने, और हमने क्या, चल भाई विशाल महेश, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है महेश। ठीक है, पे चल रहा है, तो इसको चलाते हैं ज्ञान पोर्टल महेश। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये हमारा हो गया पैरामीटराइज, कि हमने वॉइड फंक्शन में पैरामीटर पास कर दिया। चलो यार भैया ये सब तो बात कर लिया आपने कि भाई पैरामीटर, अगर सोचो कि भाई लेकिन इसका फ़ायदा ही क्या, अगर मुझे जो है ऐसा टाइप का चाहिए कि भैया कुछ रिटर्न भी तो करे ना। ये क्या मैं बार बार इसे वॉइड फंक्शन खाली फंक्शन को भेजता रहूँगा? तो यार बिल्कुल सही बात है भाई, खाली फंक्शन तो बार बार कोई भेजेगा, सही बात कह रहा है तू। तो हमने कहा चल ठीक है, तेरे लिए मैं क्या करता हूँ, तेरे लिए निकालता हूँ एडिशन ऑफ टू सम। कि मैंने कहा कि भाई चल ठीक है भाई, दो नंबर्स बना लिए हमने, एक num1 बनाया, एक मैंने num2 बना लिया, दोनों को हमने सेम दे दिया num1 एंड num2। और हमने क्या करा, हमने क्या भाई सी आउट, और हमने डाल दिया सम टू नंबर्स num1 num2।
और अब हमने क्या करा, अब हमने इसको एक इंटीजर, मतलब एक इंटीजर टाइप दे दिया। अब ये क्या करेगा, हमारी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ऐसे ही हम स्ट्रिंग चाहे तो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है, हम क्या चाहते हैं। ठीक है, और हमने क्या करा, हमने इंट num1 और इंट num2 पास कर दिए। और हमने क्या करा भाई, हमने क्या, तू रिटर्न कर दे num1 प्लस num2। हमने क्या भाई, चल ठीक है 4 और 6 ले ले, 10 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फंक्शंस की बात। अब हम बात करेंगे कि हमने आपको स्टार्टिंग में किया था कि हम बात करने वाले पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पास बाय वैल्यू को हम समझते हैं। ठीक है भाई, आखिर पास बाय वैल्यू होती कैसे और क्या होता है पास बाय वैल्यू। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। जैसे अगर सोचो, हमने एक नंबर सोचा, हमने एक नंबर लिया 5, और मैंने क्या किया, मैंने क्या भाई एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैंने सोचा कि भाई मैंने एक फंक्शन बना लेता हूँ इंक्रीमेंट करके, और उसके अंदर मैंने अपना n डाल दिया। ठीक है, इसको मैंने 5 रखा और इसके अंदर मैंने अपना इंक्रीमेंट करके एक फंक्शन बना दिया और n डाल दिया। अब मैंने कहा भाई चल ठीक है, इंट नाम का इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन बना दे और उसके अंदर n दे दे। ठीक है, बेसिकली अब मैंने क्या करा कि भाई इंक्रीमेंट नाम का जब मैंने फंक्शन बनाया, मैंने कहा कि ऐसा करते हैं ना कि इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, तो मैं 5 से इंक्रीमेंट करता हूँ और फिर उसको वो करता हूँ। तो मैंने क्या कि भाई चल ऐसे करते हैं, n इक्वल्स टू n+5 करते हैं। पहले यहाँ पे सी आउट करवा लेते हैं n को, ठीक है, और फिर यहाँ भी सेम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, और मैंने कहा भाई इस काम को ऐसे करते हैं, इस काम को एक बार और कर देते हैं, और लास्ट में यहाँ पे हम जो है सी आउट करते हैं। क्या लगता है दोस्तों, क्या आना चाहिए? अगर देखा जाए इस कोड को जो हमने लिखा है, हमने n को 5 माना है, हमने जो है पैरामीटर अपना दिया इंक्रीमेंट फंक्शन में, हमने क्या करा सी आउट करा, तो 5 आना चाहिए। n+5 कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 10, और n+5 15, तो 5 10 15, और लास्ट में जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ, लास्ट में हमने फिर से सी आउट एन करा है, तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट करा है 15 तक, तो 20 प्रिंट होना चाहिए आई थिंक, है ना दोस्त? कहाँ पे गड़बड़ कर दी? यहीं पे एरर आ रहा है 17 लाइन पे। सेवनटीन लाइन पे एरर है हमारा। कहाँ पर आ रहा है हमारी एरर? हमारी एरर आ रही है यहाँ पर। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इस रिटर्न स्टेटमेंट तो हमने को दी नहीं है। ठीक है, कमेंट कर दिया। तो इसे मैं void नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ फिर, और अब चलाते हैं। ठीक है, अरे ये क्या हो गया, इसमें तो आया 5 10 15 और फिर से 5 आ गया, लेकिन आना तो 20 चाहिए था ना। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो हमने पास करा है, ये हमने करा है पास बाय वैल्यू। इसमें क्या करा है हमने, एक पास बाय वैल्यू में क्या होता है, हमने एक कॉपी पास करी है जिसमें हमने बस जस्ट एक कॉपी सेंड कर दिया अपने अनदर फंक्शन में एक वेरिएबल की, और उसे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं बस।
लेकिन क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं। तो अब हम समझते हैं, ये होता है, ये होगा हमारा पास बाय वैल्यू। पास बाय रेफरेंस के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जैसे एक n की वैल्यू लगानी पड़ती है, ये हमें रेफरेंस देना पड़ता है, रेफरेंस ऑफ एड्रेस देना पड़ता है उस वेरिएबल का। अब देखो, अब मैंने चलाया, अब मैंने इंक्रीमेंट करा, अब क्या आएगा हमारा आंसर? एज यू सी 5, 10, 15, 15 वही वैल्यू आई जो हमारी ऊपर इंक्रीमेंट हुई थी। तो इस तरीके से हम और भी कर सकते हैं। जैसे एक मैं आपको और दिखा देता हूँ रेफरेंस के लिए एग्जांपल। जैसे हमने क्या करा, हमने क्या भाई, एक स्ट्रिंग बनाई हमने नेम नाम से, और हमने उसका नाम दे दिया पीयूष, ठीक है। और अब मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल बना लिया प्रिंट नेम, और उसके अंदर नेम दे दिया, और फिर मैंने सी आउट कर दिया नेम को, ठीक है। और ये प्रिंट नेम का मैंने जो है फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ वॉइड नाम का, वॉइड प्रिंट नेम स्ट्रिंग नेम। और अब मैंने क्या करा, अब मैंने इसे पास करा बाय रेफरेंस, और मैंने क्या कि भाई जो नेम है उसके 0th कॉलम को चेंज करके P की जगह R कर दे, ठीक है। तो सी आउट नेम, चला के देखते हैं, ठीक है, सही आ गया, पीयूष रियूष, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमारा जो है रेफरेंस जो है वर्क करता है कि वैल्यू बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस।